ओके नाउ आई विल स्पीक हियर, तो आपको आवाज आ जाएगी, आपने स्क्रीन की तरफ देखना है, ठीक है? ओके सो this is what we had done last time. दोनों काम करेंगे, ये टीम के लिए, ये क्लास के लिए। ठीक है, मैं ऊंचा बोलूंगा, मुझे इसकी जरूरत है। Okay, so we were trying to identify some good habits for doing innovative research. We might not be able to identify the key to success, but we would like to avoid the common mistakes. ठीक है, तो ये हमारा गोल है इस कोर्स का। तो देयर वर सम प्री कंसीव्ड नोशंस जो आपकी थी, और वो हमने लास्ट टाइम कुछ डिस्कस भी की थी। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का क्या जवाब था? विच प्लेस इज मोर लाइकली टू हेल्प यू कंसीव एन आइडिया? हिल टॉप था ना? इसमें मे बी द पर्सन ऑन द राइट इज मोर क्रिएटिव, लेफ्ट सॉरी, and maybe again the person on the right looks more innovative. So we will, क्या कहते हैं, we will overcome these myths, और हमने जो है we will try to come up with mental exercises that once you see something novel, uh, your first reaction is of डिसअपॉइंटमेंट। आपने कोई चीज सोची, आपने गूगल पे सर्च की और वो पहले से होगी। तो दिस फीलिंग, दिस विल हैपन मोर फ्रीक्वेंटली इफ यू आर अ रिसर्चर, एंड इफ यू वांट टू डू क्वालिटी रिसर्च, ये रोज होगा। ठीक है, यू गेट अप, यू हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम फॉर 6 months, and now you have an exciting idea, and you get to the lab or you get to your computer and you type on Google and you see कि अच्छा ये तो already published है, so you go into a very negative state of mind. So we will see how leading labs in the world, they have developed simple exercises that recover you from this depression, and it becomes a fun activity for you, that rather than getting disappointed कि ये किसी ने कर दिया है, you treat it as कि चलो ये तो किसी ने, ये मैंने करना था, ये कुछ काम मेरा किसी ने कर दिया है, and I will build on top of that. तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश की थी, अगर आपको याद हो तो the space race between US and Russia, when it started in 1957, so it was a big setback for US that Russia had launched their satellite before anybody else. It was a big victory for Russia, and disappointment for all the researchers in US. हम तो थे ही नहीं ना, तो we were immune to the challenges of life. So which is good. We kept our sanity और हम परेशान नहीं हुए. But imagine a PhD student working on a funded project in a lab in US, जिसको फंडिंग इस वजह से मिली थी कि उसने स्पेस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करनी है. How would he or she will be feeling? So generally this is the case in any area of research, but we also saw last time कि कैसे using the same advancement, somebody proposed that instead of finding the position of the satellite, a mobile receiver in space, if we have multiple mobile receivers in space, we can find the location of a mobile receiver on Earth. So the technology was there,
and they just reversed the problem. So this generated this GPS system, which is more famous and more usable than the original space shuttle technology. Everybody uses GPS. So just by reversing the problem, you came up with something which has more impact. तो ये हम करेंगे, ये जो मेंटल एक्सरसाइजेज हैं आपको नजर आ रही हैं. तो again we saw this thing also, I think so, last time. There is a fight between German researchers and English researchers who invented calculus. अगर आप इन दोनों रिसर्चर्स का टाइम पीरियड देखेंगे तो एक सा है, आप अभी देख लें गूगल पे. तो और आप ये देखेंगे कि ये जो फिनोमेना है कि दो लोग एक ही आइडिया प्रपोज करते हैं एक ही टाइम विंडो में, दिस इज अ कॉमन थिंग. इससे मुराद क्या है? अगर ये बहुत ही कॉमन है तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग वाज रेडी एंड समबडी हैड टू जस्ट पॉइंट इट आउट कि ये हो सकता है. तो एक से ज्यादा बंदे के कर लेना का मतलब ये है कि कोई भी कर सकता था, सिर्फ जिसने ध्यान दिया है उसने पहले आइडेंटिफाई कर लिया. तो ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है रिसर्च वर्ल्ड में. देयर आर मेनी एंड वी विल सी. Again, this is this question we come up with a myth that people living in rural areas, maybe they are more creative because they do things differently than us. We will see that again this is a myth and we will give you evidence that this is not the case. And this is again a very exciting question, that who do you think will come up with a new idea? A person wandering in the halls of the university, or a person dedicating his time and sitting near the microscope or the experimental operators all the time? ये आप देखेंगे. And this is very important because if I need to come up with a new idea, it is not about only gaining technical skills. It is about developing a habit and living the life of an innovator. तो हम देखेंगे कि sometimes even the Nobel Prize winning person prefers to be in the hall than closer to the microscope. तो ये देखें, हम आपको देंगे इसका evidence. Again, this is a very strange thing. Your friend helps you the most, but we will show you that if you want to come up with a new idea, your friend is not the best option. So sometimes you only interact with people who are in your lab, who are your friends. We will prove that that is not the case. So again, how do you behave socially? It will impact if you will get a good idea or not. And the interesting thing is that there was an experiment conducted. They tracked the life of researchers in a lab over a longer time, like 1 year, or after every day they used to interview people working in the lab. आज कोई नया आइडिया आया है, आज कोई नया आइडिया आया है, तो किसी वक्त तो आया होता था तो वो लिख देते थे, और फिर वो वीडियो जो है ना फुटेज निकाल के देखते थे कि ये क्या कर रहा था, तो इसको नया आइडिया आया है. तो पूरी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती थी कि इसको नया आइडिया कैसे आया. एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वन वेरी इम्पॉर्टेंट विच यू शुड कीप एन आई ऑन, इसके आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट्स वो नहीं थे जो आप चाहते थे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टाइम इन योर एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, नॉर्मली अगेन अ नेगेटिव फीलिंग टेक्स ओवर अस, बट इफ यू हैव टू कन्विंस समबडी, ये इंस्टेंट्स आपने इनको स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है. नॉट एवरी एरर इज ग्राउंड ब्रेकिंग एरर, बट द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स या आएंगे आपको कि ये जो एरर थी, दिस मेक्स योर वर्क मोर एक्साइटिंग, मोर लाइफ लाइक. व्हेन यू आर रिपोर्टिंग योर रिजल्ट्स, यू नरेट अ स्टोरी कि ये किया था तो ये हो गया,
और उसके बाद फिर ये हो गया। जब इस तरह बताएंगे तो लोग ज़्यादा सुनेंगे, और अगर आप ये बताएंगे ना ये किया और बहुत ज़बरदस्त हो गया है, तो उसमें लोगों को शक रहेगा। Not only how you interact with people, but how you plan your daily activities, it plays an important role, and we will prove that one of the sleeping patterns is better than the other. आप अपनी पिक कर लें, which pattern looks better to you. आप अपनी जो आपकी हमें बताया जाता है कि कैसे सोना है, कितने बजे किस तरह सोना है, तो people have tried to choose one of these methods. maybe ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, तो इनकी इंटरमीडिएट हम देखेंगे कि so we have to actually, if we really want to become an innovator, we have to uh, see whom we are interacting with, how we are how we are treating everyday events, failure experiments, how much we interact with the people outside our lab, how do we sleep. So this is this is the these are the things we want to share with you. Uh, all the other courses that you will take and you have been taking as an undergrad student, they were focused on developing technical skills, which is good. You need those skills. जब आपके जहन में एक आइडिया आ गया, then you need to do the experimentation. तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने आनी चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना आना चाहिए. Those are important ingredients. But these skills we don't generally talk about, and the preconceived notions that we have, they are not substantiated. So we will see that research is much more fun than it is that you will see while you are here, and you might have seen when you were doing your undergrad project. It's about the failed experiments and the depression you face. So the good labs that I have been part of once upon a time, so there I saw people treating research as a game. It was a fun activity going around. So we want to share those things with you so that we come up with the best ideas. और जिन्होंने मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा है, आप में से तो सब नहीं पढ़ा होगा, तो आपने देखा है कि in order to come up with an innovative idea, you don't need to come up with a new theory all the time. So very simple ideas, they emerge if you make the research exciting. So this was the question that last time जो हमने डिस्कस किया था. कितने ट्राइंगल नजर आ रही हैं आपको? एक भी नहीं है, और आपको दो शायद नजर आ रहे होंगे. तो व्हाई इज दैट? तो once we face failure, and once this thing comes into our mind that I am not good enough, and fear takes over your brain, then the experiments have shown that आपकी आंखें आपको एक्चुअल में धोखा देना शुरू कर देती हैं. तो दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. तो ये जो फेमस स्टोरी हम सुनते हैं कि देयर वाज अ किंग, और उसको किसी ने बहुत महंगे कपड़े बेचे ये कह के कि ये सिर्फ बड़े अजीम लोगों को नजर आते हैं कपड़े और बाकियों को नहीं आते. तो बादशाह ने तो उसको तो नजर नहीं आ रहे थे, तो अब ये तो नहीं कह सकता था कि मुझे भी नजर नहीं आ रहे, तो उसने फिर कुछ पहना ही नहीं. अब जब वो पब्लिक में गया तो हर बंदा डरता था कि अब इसको बताएंगे ये तो इसने कुछ पहना ही नहीं हुआ. तो दी साइंस हैज प्रूव्ड
कि वो जो लोग थे जो स्ट्रीट्स में थे उन्हें वाकई ये नजर आ रहा था कि इसने कुछ नहीं पहना था. दिस इज हाउ फियर चेंजेस योर इनपुट ऑफ आई. ये जो आंख से लाइट जा रही है वो बीच में तब्दील कर देता है. दिस इज नॉट अ मिथ. तो वी विल सी कि कैसे फिर once fear takes over you, then creativity dies. And then what is the simple exercise that you can do to break out of that pattern? हम देखेंगे. तो this is called the herd effect. कि once failure, you face failure, then you need to come up with an exercise to recover from that failure. Okay? Again, this is a very interesting experiment. इन्होंने कुछ लोगों को कहा कि आप जो है ना ड्रेस लाइक अ डॉक्टर, और देन दे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. उन्हें कहा कि ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें. तो जो लोग काफ़ी दिनों से डॉक्टर बन के फिर रहे थे ना, तो उन्होंने वो सवाल बेहतर सॉल्व किए एज कम्पेयर टू जिन्होंने थे एक ही क्लास के. एक्सपेरिमेंट शायद ये था कि दोनों तस्वीरों में 7 डिफरेंसेस बताने हैं आपने. सादा सवाल था, कोई टेक्निकल सवाल नहीं था. इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, people who were dressing smarter, they were giving better answers. So this is how our brain works. It is your attitude that sometimes helps you. If the problem is not getting solved, you should be motivated. It's a learning curve, and these failed experiments are leading me to the successful experiment. Then the problem is that how to become more creative is very difficult, or there are so many books. If you go to a bookstore, इतनी ज़्यादा किताबें हैं ना क्रिएटिव थिंकिंग पे कि you will drown yourself in those books. लेकिन my personal experience is that all of those it's a junk. It doesn't help you. It doesn't give you a concrete answer कि क्या करूँगा तो मैं I can improve my skills. So we will try to find those exercises which have helped me as a researcher, a young researcher, and which very productive labs in the world they are suggesting. ये जो triangle hexagon बना हुआ है ना, it's a very exciting experiment. That if you have any good idea how you can like start playing with it. और इसकी एक एग्जांपल है जो मैंने आपको दी है कि आप रिवर्स कर दें प्रॉब्लम. It's not always that you reverse and you come up with something good. Sometimes it's totally nonsense. But if you develop this exercise and you keep on rehearsing this thing in your brain every time you see something new, once in a year you will get something which is really meaningful. So what is the next stage? Let's say you develop these habits. Yeah, let's say you were lucky and you had an idea. And now just having a good idea is not good enough. You want people to appreciate your idea. So this is the real part of a researcher, that you are giving a presentation or you are writing an essay or an article and nobody cares. आप किसी presentation में you might have attended so many presentations that you are sitting and you are not even paying attention. So this is not rare, this is very common. So again we need to come up with some
habits, some exercises that can help us overcome this challenge. और जब आप किसी प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया होता है, like any project, any semester project, so you are faced with the curse of knowledge. ये जो नीचे लिखा हुआ है, आपको आगे चीज, अब जब आप दूसरे को बताना चाहते हैं तो आप उसको बता रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है आप ठीक बता रहे हैं, और जिसको नहीं आती उसको ये लग रहा होता है कि आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो उसकी ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हुई थी, ये अगेन अ वेरी फेमस सोशल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कुछ लोगों को कहा कि आप डेस्क पे ना ट्राई टू प्रोड्यूस द बीट ऑफ अ कॉमन सॉन्ग, कॉमन ट्यून, जिस तरह हैप्पी बर्थडे हो गया या कोई तरह नेशनल एंथम हो गया, जो आपको लगता है कि आप बजा लेंगे डेस्क पे और लोगों को समझ भी आ गई। और इन्होंने कहा बजाएं, और फिर इसी तरह लोग सामने बैठे हुए थे तो उनसे, अच्छा जब इन्होंने बजा ली, इन्होंने कहा कि अच्छा, फिर जिन जो बजा रहे थे उनसे पूछा कि हाँ जी आप बताएं कितने लोगों को आपकी बजाई हुई ट्यून समझ में आ गई होगी। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था मेरा आधों को तो आ ही गई होगी, 60 आउट ऑफ 120। और जब उन्होंने सर्वे किया कि आप बताएं क्या ट्यून थी ये, तो उसमें से 3 को ही समझ में आई। तो दिस इज द कर्स ऑफ नॉलेज। जब आपको कोई चीज आ जाती है ना और जिसको नहीं आती होती, उसके बीच में एक गैप है। अब या तो आपको आती है और या आपको नहीं आती। तो जब आपको आ जाती है ना तो दूसरे को बताना बहुत मुश्किल है। उसकी भी कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। वो जो ये 5 चीजें लिखी हुई है ना, वी गो थ्रू दीज एक्सरसाइजेज। जिस तरह अच्छा आइडिया सोचने की कुछ एक्सरसाइजेज है ना, इसी तरह आपका ऐसे जो है या आपकी जो प्रेजेंटेशन है, यू हैव टू कीप इन माइंड फ्यू सिंपल रूल्स, और यू हैव टू लाइक रिहर्स। और हम देखेंगे ये सिंपल टिप्स हैं। इसमें से ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एज अ रिसर्चर आप लोग फेस करेंगे। वी रीड द स्टोरी ऑफ गैलीलियो। एक इनमें से जो था जिसने कहा कि जो है जमीन, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, जमीन घूमती है सूरज के गिर्द। नोबडी बिलीव्ड हिम, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, और उसको जो है ना ही हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये स्टोरी पढ़ के ना ऐसे लगता है कि ये बस उसी जमाने में होता होगा, अब तो हम आगे आ गए। तो उससे बाहर नीचे लिख दिया था कि मैं बदल देता हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं, तो बट इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। वी विल गिव यू एन एग्जांपल दैट इवन नोबेल लॉरिएट्स, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीतना है, उसी चीज पे, उनकी चीज पर एतबार नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो एज अ रिसर्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने जब तक कन्विंस नहीं ना करना अपने पीयर्स को, इवन इफ यू हैव डन एक्साइटिंग थिंग, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, इट विल नॉट गेट पब्लिश्ड। इवन समथिंग दैट विल गो ऑन टू विन द नोबेल प्राइज, तो ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं होता, ये असल जिंदगी में यू विल फेस दिस थिंग। इफ यू गो टू टॉप वेन्यूज, if you want to publish in very good places, you have to understand this thing कि कैसे जो है you make your results believable to the community. So generally what happens in our lab is that the moment you have excellent results, the person raises hands and says he goes on a victory lap कि भाई मैंने कर दिया कमाल। बट
unless you are able to write well and unless you are able to present well, so you will not get the credit for what you have done. So you have to realize how important this skill is. You will not gain this skill just by walking through the corridors of NAS. आप 2 साल यहाँ गुजरेगा 2 साल का और magically when you are about to finish your thesis, you have all these qualities. This is, and these skills are not related to AI. This is related to anything you do in life. You want to be a salesperson, you want to be a startup manager, so har jagah you have to go through these cycles. So these skills are invaluable. Person who can write well, who can express his ideas in a way that people accept it, it's invaluable. Rarely you will find people. Or it's not an inborn talent. इसका भी ताल्लुक रियाजत के साथ है कि आप कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे और फिर अगली अटैम्प्ट में और बेहतर हो जाएंगे. यू कीप ऑन इम्प्रूविंग थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, तो आर एम इज that you write an article and present an article in this course, and we will invite other professors to evaluate, and hopefully you will improve. तो ये राइट पे आपको नजर आ रहा है, लेफ्ट पे जो नजर आ रहा है, आपके लेफ्ट पे जो है क्या है ये इसको कौन कौन जानता है येलो वर्ड को? ये तो सब नहीं देखा होगा. अच्छा, जो राइट पे है वो किसने देखा हुआ है, वो वाला कैरेक्टर? ये जो है ना, ये जो ब्लू डॉग है, ये कम लोगों ने देखा हुआ है. और ये जो लेफ्ट पे है, ये इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ जनरेशन, इट इज सो फेमस. आप कहीं पे भी बोले इनका नाम, सेसमी स्ट्रीट का, तो सबको पता होता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो बट दिस ब्लू डॉग हैज मोर रेटिंग्स. आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे ना, तो वो ब्लू डॉग को याद, उसको ब्लू डॉग का पता होगा, वो कहेगा मुझे ये ब्लू डॉग वाला ज्यादा पसंद है. तो ओवर द कोर्स ऑफ years they conducted social experiments and they figured out कि ये जो सेसमी स्ट्रीट है ये कहाँ कहाँ गलती करता है, कहाँ लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट लूज होता है. एंड जस्ट बाय ट्वीकिंग दोज small things they managed to beat Sesame Street, which looks unbelievable. कि आप एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर बना लेंगे जो इनसे भी ज्यादा फेमस होगा. तो अगेन सिंपल स्किल्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन यू हैव टू मेक अ चॉइस. So which of these two items do you think it helps in writing? Obviously the pen. ये दूसरा तो मैंने ऐसे ही रख दिया था just to test your intelligence. तो you should be confident. कम से कम इस सवाल का तो जवाब आपको देना चाहिए था ना. पेन से ही लिखते हैं ना, उससे कैसे लिखते हैं? तो इससे भी लिखता है, यूज स्टिक से भी. क्रिएटिव होना एक बात होती है और हिला हुआ होना दूसरी बात है. तो अगर आप इससे लिख रहे हैं ना दूसरे से, तो दिस इज नॉट द प्लेस यू शुड बी. यहाँ पे कहीं दायमा अस्पताल हो गया, जल्दी पहुंचे आप.
कौन सा ऐसे बेहतर लिखा हो? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स यू विल फेस। अभी जब आपको हम असाइनमेंट देंगे ना, तो यू विल सी के द प्री कंसीव नोशन दैट यू हैव इन माइंड इज के चीज़ें नीट और क्लीन होनी चाहिए, एंड दैट समटाइम इट बिकम्स अ मेंटल बैरियर। और जो है ना फिर तो हम देखेंगे कि ये these are the small things, these preconceived notions that you have, they affect you when you start to join the research world, and these are the things which people don't talk about. मैंने होमवर्क करना है तो पहले मैं कॉपी रखूंगा, फिर टेबल साफ होगी, फिर मैं पेंसिल शॉर्प करूंगा, फिर रबड़ होगा साथ। अगर इस तरह मैं लिखूंगा तो ये these are good habits, but you will see that this kind of attitude sometimes affects you. This is called perfectionism. So, writing. So we started with good ideas. So we started with preconceived notions. फिर अच्छे आइडियाज आना बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स एन एक्सरसाइज। फिर हमने कहा कि अच्छा लिखना जो है ना उसकी भी कुछ स्किल्स हैं। वी विल सी कि वो ह्यूरिस्टिक का क्या रोल है लिखने में। और फिर जब लिख लिया और आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? फिर अब आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो if you present and people like your work, they will use your work, and if you will present मतलब जिसमें किसी को इंटरेस्ट ना हो तो फिर आपने जो मर्जी किया हो। कितने लोग रिसर्च करते हैं, किसी और की रिसर्च वो सुनेंगे, आपकी क्यों सुने? एंड दिस इज वेरी इजली यू कैन टेस्ट इट। अभी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, कोई भी प्रेजेंटेशन हो रही है ना, आपने वो जाकर बैठ के सुननी है और आप ये देखेंगे कि कैसे जो है ना ये जो कर्व है ना इट डिटरमिन्स कि आप जब स्टार्ट करती हैं प्रेजेंटेशन तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों का, और फिर आपको पता होना चाहिए कि बोलते बोलते बीच में लोग सुनना बंद कर देंगे। तो फिर ये आपकी हिम्मत होनी, आपको ये जहन में रखना है कि ऐसे नहीं होगा किसी दिन कि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और जो है ना प्रेजेंटेशन खत्म हुई और सारे खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी कि क्या बात की आपने। ऐसे नहीं होता असल जिंदगी। असल जिंदगी में ये होता है कि मैं बोल रहा हूँ और आप कह रही हैं कि अच्छा ठीक है आप सुनिए, आप आगे भी चलो। और कुछ लोग मोबाइल पे अपने जो है ना वो यूज करें। यू हैव टू टेक दीज थिंग्स इनटू अकाउंट। दिस हैपेंस इन रियल लाइफ। So you have to you have to understand that at one point when you will talk about technical things, people will start using their mobile phones. How can you recover and finish your talk so that they get the message कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं? This is the cycle. Excitement ऊपर, excitement नीचे। आपको पता है ये सुन नहीं रहे थे, और उसके बाद जो है ना you have to prepare your presentation in a manner के जो ना सुन रहा हो उसको भी कुछ पता चल जाए। These are the skills which experts use. तो ऐसे कभी नहीं मैंने जिंदगी में होते हुए देखा कि आपने कोई टॉक दी और हर बंदा खड़े होकर ना तालियां बजाना शुरू कर दी। अगेन दैट हैपेंस ओनली इन बॉलीवुड। अगेन विच स्लाइड इज मोर इम्पोर्टेंट? आप प्रेजेंटेशन सुनने गए हैं तो आप ये देखना चाहेंगे ना कि वो बंदा क्या बात करना चाहता है, तो कौन सी स्लाइड इम्पोर्टेंट? इसका क्या जवाब है? आप गए इन एनी रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जो टाइम मिलता है ना आपको आपके 1.5 साल के एक्सपेरिमेंट्स का, दे गिव यू 12 मिनट्स, 12 मिनट और प्लस 3 मिनट्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपसे गलती हो गई है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ और आपने 2 मिनट ज़ाया कर दिए ना, तो नाउ यू हैव 10 मिनट्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। दे डोंट अलाउ कि अच्छा आपका कंप्यूटर, और अगर 12 के 12 मिनट आपका कंप्यूटर काम नहीं किया तो बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
यू कैन नॉट से कि अच्छा मेरा तो कंप्यूटर बंद हो गया था, मैं नहीं जाता इधर, मैं तो इधर खड़ा रहूँगा. तो द सिंपल रूल इज you talk about all the main points, और फिर अगर आप कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं ना तो वो आखिरी स्लाइड पे आपका मैसेज होना चाहिए, क्योंकि जब लोग सवाल कर रहे होंगे तो ये स्लाइड ये नज़र आ रही है. ठीक है, तो ये थैंक यू लिखे बगैर ना आप एक्चुअली अपना मैसेज लिखें वहाँ पे, समरी बनाकर, कोई तस्वीर बनाकर, ताकि अगर आपको नहीं मिला वक्त बोलने का तो एटलीस्ट एक स्लाइड तो आप दिखाने में कामयाब हो जाए ना. और अगर आपने वो वाली बनाई हुई है जिसपे थैंक यू लिखा हुआ है तो वो 7 थम्स डाउन भी आप ही के लिए. Okay, so then there are other issues. So good habits for brainstorming ideas, and if we do manage to get an idea and we get very good results, then effective writing, it's a very painful process. Assignment आखिरी रात ही क्यों होती है? We have been students. Why is it that आखिरी रात सारी assignments हो जाती हैं? उससे पहले तो हमसे हो नहीं रही. Why is that? ठीक है, तो राइटिंग इज अ वेरी tedious task, इतना आराम से होता नहीं. I remember I was doing masters and one of my friends, we were doing thesis, individual thesis. So after 8 months or I don't know 9 months, the time came that we started that now it's time to write our thesis. And then he came to me next day and he said कि मैंने ना अपना थीसिस स्टार्ट कर दी है. मैंने कहा कितना लिखा है तुमने? कहते मैंने बस वो टाइटल पेज सेव किया था सर, फिर मैं थक गया था. तो दिस इज अ रियलिटी. Starting writing is a very draining process, and if you don't appreciate and accept this thing, you will feel uncomfortable all throughout the writing time. So specifically for AI and autonomous systems, we want you to go through this cycle once before you get to your thesis. So this is why we will take it seriously this time. Don't get distracted by students from other streams. We will give you research papers, you will write a report, we will grade it, and those students who did not invest enough time, they will not pass the course. Usually the tradition is that RM is a course that everybody passes. We wish that everybody passes, we don't mind. But if you don't go through this exercise, then you will be stuck 1 year later. And then there are other issues that will be accompanying you, that your thesis is not as exceptional as you thought it would be, and then you don't like to write, and then there are other responsibilities. So we will take a serious note of this, and we will help you, and hopefully you will uh, get through that cycle and you will understand the basics. What is better presentation and what is the research report? What is the supervisor expecting you at least? Most of our students are unable to gain benefits of their exceptional experiments, very good experiments. It's just that they are unable to write. And since they are unable to write, whenever they submit, it gets rejected. So if you really want to benefit, then you should go through these exercises and take them seriously. And then there are these other issues which I will share with you as we go along. Okay. So let's take a क्या time हो रहा है? Let's take a 10-minute break. और उसके बाद we will start with the software, and it is very easy. कुछ लोगों ने यूज किया है, जिन्होंने नहीं किया आज वो when they leave the lab, hopefully they will be experts of that. Let's take a 10-minute break and then you can come back.